ले जाने वाला शब्द क्या है? मालूम है आपको? वो ये है कि हेल्दी रहने के लिए मुझे क्या खाना चाहिए? या फिर क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए सही है? या मैं किस तरह की लाइफ़स्टाइल अपनाऊँ ताकि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स मुझे ना हो? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो अक्सर आप और हम गूगल करते रहते हैं। मुझे मालूम है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफ़ाक रखेंगे। इसलिए आज मैंने क्या किया, आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है, जो कि इस विषय पर स्वयं भी बहुत रिसर्च कर चुके हैं और अब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आज मेरे साथ एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक डॉक्टर साहब नहीं बैठे, एक इंजीनियर साहब बैठे हैं, वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर और इंजीनियर होकर के वो लोगों की लाइफ को इंजीनियरिंग के माध्यम से बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब वो आपको आपकी इनर इंजीनियरिंग ठीक करने का तरीका भी समझा रहे हैं। वैसे तो ये सद्गुरु जी का शब्द है, पर फिर भी मैं इनके लिए ज़रूर इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे साथ है मिस्टर के.एस.जी. राव। इनका नाम बहुत लंबा है इसलिए मैंने शॉर्ट करके आपको बताया। वेलकम सर, वेलकम। Namaskar, Yogita नमस्ते। ji. I कैसे हैं appreciate सर आप? your great, super. I always tell people I'm on top of the world. You should be on the top of the world, sir, because you have been guiding everybody through your personal experiences. So, since when we plan to do a live, I had a question in my mind. We talk about health, we discuss health with doctors, but discussing health with an engineer is a very difficult task for me as well because people might think, why should we listen an engineer? And why is he guiding us for this? Because doctors are available in the market, doctors are there on internet also, and we can ask them about everything. They will be the right guide to us. So why you? What made you start up with this and start explaining people about health and lifestyle? Yes, madam. See, basically क्या हो रहा है हाँ, कि for one somebody has to become healthy क्या चाहिए उनको? उनको सही हाँ, नॉलेज चाहिए, हाँ, सही-सही नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ-साथ क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। देखो हम्म, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, आई वाज़ वर्किंग इन एस्कॉर्ट्स लिमिटेड वो दिल्ली वाला कंपनी। फिर हम्म, क्या हुआ अंटिल 2014 तक है ना, मैं 11 गोली शुरू कर खाना खाना शुरू कर दिया, 11 स्टार्टिंग फ्रॉम 11 1 गोली से लेके 11 हो हाँ, गया। हाँ। अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम डायबिटिक के लिए, फिर ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, किडनी स्टोन के लिए। तो जब 11 गोली हो रहा था दोपहर को मतलब 5-6 गोली, रात को 5-6 गोली ऐसा चल रहा था। तो फिर मेरे को मतलब कोई बुरा नहीं लगा था, जब भी ऐसा गोली डाल दिया काम चलता रहा। देन व्हेन आई रियलाइज्ड दैट लुक इट वाज़ आई फीलिंग मिज़रेबल कितना गोली खाने से अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या हुँ, हुआ एक दिन मैंने विजयवाड़ा गया था हुँ, जनवरी 2014 में वहाँ पे मैंने एक किताब लिया था। हुँ। डॉक्टर मंचना का एक किताब है, वो किताब का नाम है हाउ टू गेट रिड ऑफ डायबिटीज विदाउट मेडिसिन। अच्छा। वो हाँ, बहुत अच्छा किताब वो डॉक्टर है, वो 25 साल से लोगों को फ्री लेक्चर देता है हुँ, लाखों लोग बेनिफिट हुआ उनसे, उनका डॉक्टर से। राइट। मैं हुँ, जानता हूँ डॉक्टर के बारे में बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। जब ये बुक मैंने ट्रेन में पढ़ा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, ट्रेन में मैंने आधा पढ़ लिया। अच्छा। जब से ऑफिस में गया पूरा बैलेंस हाफ पढ़ लिया। फिर मैंने उसकी जो गाइडलाइंस है मैंने 100% फॉलो किया। कोई नोबडी टू गाइड मी, आई जस्ट फॉलोड। मैं देख ओह! रहा था मेरा वेट कम हो रहा था, मेरा जो बेली फैट कम हो रहा था, मैं चेक कर रहा था बीपी कम हो रहा था, ब्लड शुगर भी रीज़नेबली आ रहा था। हाँ, 4 महीने के बाद जब मैंने फॉलो किया था, मैंने नोटिस किया 8 केजी कम हुआ मैं। मेरा ओह! जो बेली फैट एकदम गायब हो गया। फिर वॉव! जब मैंने डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को बोला था, "डॉक्टर साहब मैं ऐसा ये जो गोली-वोली सब बंद किया था, बंद कर दिया।" मतलब इट वाज़ लिटिल ब्रेव डिसीजन। सी जनरली डायबिटिक आई वाज़ डायबिटिक फॉर हाँ, 12 years. skipping medicine is something nobody does it, and या that's why they don't trust anybody else. ट्रू, ट्रू। तो ये क्या है कि बेसिकली आई अंडरस्टैंड जब मैंने डॉक्टर को बोला था, डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल हड़का दिया, "अरे! ऐसा कैसा कर सकते हो?" फलाना-ढिमाका। मैंने बोला, "ठीक है डॉक्टर साहब, अपना सब टेस्ट कराएँगे।" क्योंकि मैं बीच-बीच में चेक कर रहा था, मेरा ब्लड शुगर कितना है, पीपी कितना है, फास्टिंग क्या है, मैं बीपी चेक कर रहा था, मेरा वेट कम हो रहा था। देन आई वाज़ हुँ, फीलिंग बेटर, वी हुँ, इंक्रीज़। जब जब डॉक्टर साहब ने वो ब्लड टेस्ट कराया उनका लैब में 3,500 कुछ खर्च किया था जनवरी समटाइम अप्रैल 2014 में। जब रिपोर्ट आया था वो पूरा देख के मेरे को मेरे ऊपर मेरे पास देख मेरे साथ मेरे को देख के वो प्रिंट आउट दे दिया था मेरे को एक प्रिस्क्रिप्शन। वो जनरली वो मेरे को 3-4 गोली लिखता था बीपी और शुगर के लिए। बट इस हाँ, बार एक ही गोली लिखा, लिख के मेरे को दिया था। मैं जब वो प्रिस्क्रिप्शन देख के बोला था डॉक्टर साहब मैंने पहले ही बताया था आपको मैंने गोली खाने वाला नहीं हूँ। ये क्या गोली है? बोलता है मिस्टर राव
I cannot take empty paper from the printer. I have to write something. तो ऐसा हुआ था मेरा जर्नी। देन आई एम नॉट सेइंग पीपल टू स्टॉप मेडिकेशन, नॉट एट ऑल। इसके हाँ, लिए बहुत ही आपका जो नॉलेज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। दैट्स हाउ आई गॉट रिड ऑफ माय मेडिसिन। लास्ट 10 इयर्स आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा डायबिटिक एकदम क्यूर हुआ, नॉट एट ऑल। क्योंकि हुँ, अब 65 मैंने हुँ, इतना मतलब गलत किया था लाइफ में। वो क्या हुआ, मेरा पैंक्रियास टू लार्ज एक्सटेंट इज नॉट फंक्शनिंग लाइक नॉर्मल। तो मेरा ओह! एचबीएवाईसी रीजनेबली ओके 7.2 7.3% है, बट बिना गोली, एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। So this is how I have overcome my journey. Now, in the last about 5 to 6 years, I'm हुँ, an Christian to teach the people the knowledge, and I help people to get rid of their medicine. Not that I don't suggest follow the methodology, check your parameters, go to the doctor, show all your parameters. If doctor says to stop the medicine, that's how our journey has started, ma'am. Thank you. पर सर डॉक्टर्स तो कभी बोलते ही नहीं है स्टॉप द मेडिसिन वंस इट स्टार्टेड मींस इट इट विल रिमेन थ्रू आउट द लाइफ हमारी जिंदगी में जैसे सांस चलती है ना एग्जैक्टली वैसे मेडिसिन भी अब चलती हैं और कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो नहीं हो ब्लड प्रेशर हो नहीं हो एवरीबडी इज हैविंग द मेडिसिन नाउ बिकॉज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो हम सबके साथ है आप जब लोगों को ट्रेन करते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ तो लोगों को आप पे ट्रस्ट डेवलप करने में थोड़ी मुश्किल तो होती होगी अभी देखिए मैडम, देखो एक्चुअली जो डॉक्टर्स बोलता है वो सही है। देखो, फॉर स्टॉपिंग द मेडिसिन यू हैव टू हैव द राइट नॉलेज एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं मैडम, सपोज शुगर है किसी को, बोलता है ठीक है मैंने थोड़ा शुगर लेना बंद कर दिया, चाय कॉफी में शुगर डालना बंद कर दिया, स्वीट खाना बंद कर, इससे काम नहीं बनता है। दीज आर ऑल हाफ मूव। It has to हम्म be a holistic approach. So what doctors are telling is correct. Lot of people don't follow 100%. See, हम हुँ, लोग क्या सोचते हैं, खाना alone is not the matter. Exercise alone is not the matter. There are other things. अब देखिए, आपको मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सांभर बनाना चाहते हो। हुँ, सांभर को अच्छा से आपको डिलीशियस आने के लिए आपको अच्छा लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। आप ये बता सकते हो कि किसकी वजह से आपको टेस्ट आया? आप सोचते हो कि साल्ट डालने से टेस्ट आया, मिर्च पाउडर डालने से टेस्ट आया, ये मतलब नहीं होता है। अगर साल्ट निकालेगा, टेस्ट खराब होगा। अगर साल्ट राइट, सही है बट मिर्च पाउडर नहीं है, टेस्ट खराब रहेगा। वैसे ही है। तो हेल्थ के लिए लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज। अरे डाइट करूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँ, फलाना डाइट खाऊँ, डिमाका डाइट खाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स वन इंग्रेडिएंट ओनली। देयर आर हाँ, 7 इंग्रेडिएंट्स फॉर हेल्थ। हमें पता है व्हाट आर द 7 इंग्रेडिएंट्स? किसी को पता है? हमें नहीं पता है। वी हैव जनरल आइडिया ओनली। देयर आर 7 एसेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ। मतलब 7 चाहिए। अब जैसा आप चाय बनाना चाहते हो, चाय पत्ती चाहिए, मिल्क चाहिए, पानी चाहिए, शुगर चाहिए, है कि नहीं? इसमें हुँ, अगर ये भी नहीं है तो आपको चाय अच्छा नहीं आएगा। वैसे राइट, ही देयर आर 7 एसेंशियल्स फॉर गुड हेल्थ। आप गेस कीजिए व्हाट आर द 7? हम सभी कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग हैप्पीजार्डली। हाँ, When you do all them correctly, then you get the correct health. Let's look at what are the 7 essentials for good health. या प्लीज़ लेट मी नो इवन आई एम डाइंग टू नो दैट नहीं, we all know we are doing it. अब मैं बताता हूँ मैडम, वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, 7 में 6 कॉमन है। 6 हुँ, आर कॉमन फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ओके, ओनली 7 में अलग है फॉर ह्यूमन्स। लेट मी टेल यू। फर्स्ट इज एयर। इफ यू डोंट ब्रीथ एयर फॉर 3-4 मिनट्स, वी कांट सर्वाइव। भगवान का कृपा से वो ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर आप में बोलता है कि आप मतलब ध्यान से हवा लेना है, तो हम लोग भूल जाएँगे। सो हुँ, हवा, वन इज़ एयर, इफ यू यू कांट लिव मोर देन 3-4 मिनट्स। या, दूसरा क्या है? दूसरा पानी। इफ यू डोंट टेक वाटर, इफ यू डोंट हुँ, गेट वाटर फॉर 1 वीक, आई डोंट थिंक यू विल सर्वाइव। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा हुँ, है फूड। बिना फूड के वजह से यू कैन स्टे फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स भी थोड़ा वीक हो जाएँगे, इसका ये मतलब नहीं कि खाना मत खाओ। हुँ, खाना इज़ नॉट एज़ इम्पोर्टेंट एज़ वाटर, हुँ, वाटर इज़ नॉट एज़ इम्पोर्टेंट एज़ एयर, है कि नहीं? एयर, हाँ, एयर, वाटर, फूड 3 कवर कर दिया। अब बताइए बाकी 4 क्या है? हमें सब कर रहे हैं। एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़? एक्सरसाइज़, वेरी गुड। सी देखिए, एक्सरसाइज़ ऐसा है, ओनली ह्यूमन बीइंग्स है ना मैडम, उनको हुँ, अगर बेडरूम से हॉल में आ गया तो खाना मिल जाएगा। हॉल में खाना नहीं, किचन में जो खाना मिलेगा। किचन में नहीं, फ्रिज खोलो खाना मिलेगा। अगर नहीं है तो क्या है? एक फ़ोन करो ज़ोमैटो, खाना आ जाएगा। पर देखो बाकी बाकी ऑल एनिमल दे हैव टू वर्क फॉर इट, दे हैव टू रन फॉर इट। या, Exercise is a very important aspect which is people are doing haphazardly. और हुँ, फिफ्थ वाला क्या है? We have covered air, water, food, exercise. What is the fifth one? स्लीप? Excellent. Sleep. Sleep is very important. 7 hours sleep is non-negotiable.
If somebody doesn't get a proper sleep, is bound to get healthy problems. Sleep. What else? We covered five: air, water, food, exercise, sleep. Okay, let me tell you. The fifth one is excretion, removal of the waste from the body. ओह! See, there are four waste we get out of from our body. One is stools, toilet, हाँ, हाँ, urine, हाँ, sweat, and the हाँ, breath. ये चारों सही से काम करना चाहिए। अब देखो लोग बोलता है, देखो भैया दिन में 4 बार खाओ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खाओ, स्नैक्स खाओ, कॉफी, टी खाओ। बट टॉयलेट कितने बार जाना पड़ता है दिन में? लोग एक एटलीस्ट बार 2 जाते 2 हैं। बार जाना ज़रूरी, 2 बार। 2 बार जाने से अगर आपका अगर इफ यू कम ऑन टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई वुड शो यू अपना लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, उसमें कितना मल भरे रहता है। इफ यू डोंट क्लियर इट 2 टाइम्स इन अ डे, इट वोंट बी टोटली क्लियर्ड। सो ओह! एक्सक्रीशन, यूरिन का देखो, यूरिन का तो यू कैन नॉट होल्ड इट। मतलब दौड़ के जाना पड़ता है। लोग हुँ, देखो टॉयलेट तो कुछ लोग डेली दिन में 1 बार जाते हैं, कुछ लोग 2 दिन में 1 बार जाते हैं, 3 दिन में 1 बार जाते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज 2 टाइम्स बाउल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। यूरिन पार्ट ऑफ आउट कितना आउटपुट होना चाहिए यूरिन? जनरली लोग पानी कम पीते हैं, दे डोंट ड्रिंक वाटर। सो हुँ, मिनिमम 1.5 to 2 लीटर्स अपने बॉडी से यूरिन का रूप से बाहर जाना चाहिए, तभी अंदर क्लीनिंग होता है। ओह! Okay. Next हो गया, we have covered air, water, food, exercise, excretion, sleep. आपने sleep भी कर दिया। हाँ, Sleep का हाँ, ये मतलब होता है मैडम, sleep का मतलब सोना ही नहीं है। We हाँ, have to give rest और internal organs. देखिए हम लोग क्या करते हैं गलत, सवेरे उठ जाते हैं 5 बजे, जैसे कॉफी पी हुँ, लिया, हुँ, फिर बाद में नाश्ता हो गया, फिर ऑफिस गया, ऑफिस में कॉफी चाय मिलता है, लंच हो गया, फिर अच्छा 4 बजे 3 बजे ऑफिस में सबको कॉफी चाय कुछ मिलता है, इवनिंग 6-7 बजे कुछ स्नैक्स वैक्स खाते हैं, रात को 8-9 बजे खाना खा लिया। तो क्या हुआ? हुँ, फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock, नाइट 10 o'clock, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग। हुँ, So rest to digestive system is very important. This is where the intermittent fasting people talk about it. हुँ, हुँ। So rest. So these are the six are common for humans and animals. What is the seventh one? We are gifted, and the gift is becoming a curse for us. What is that? नो आपने पता आइडिया। है? Mind management. If we don't know how to आह! manage our mind, see, we get stressed for small, small things. If somebody comes and whispers and says you're a fool, we can't sleep that day. Ah, that guy called me fool, and you are यस, getting irritated. So how do we यस। manage your mind? See, animals के लिए problem ही नहीं है. Look at the psychosomatic diseases. There are many diseases happening because we don't know how to manage our mind. आपने सही कहा था, इनर इंजीनियरिंग सदगुरु बोलता है, इफ यू हाँ, डोंट नो हाउ टू मैनेज योर माइंड यू आर बाउंड टू गेट इट। बोलता है यू कीप योर रिमोट कंट्रोल विथ यू। हम लोग क्या करते हैं, हमारा रिमोट कंट्रोल वी हैव गिवन टू मेनी पीपल। सबके पास है। हाँ, हाँ, हाँ। एनीबॉडी कैन कम एंड मेक वन स्टेटमेंट और मेक अ प्राइज और अब्यूज यू, यू आर ऑफ द यस, बैलेंस। यस, So these are the 7 essentials for good health. Now we have understood the essentials. Like as I said to you, चाय बनाने के लिए हमको 4 इंग्रेडिएंट चाहिए, चाय का पत्ता, हुँ, दूध, पानी, शुगर। चीनी, अगर इसमें एक भी नहीं है, अगर एक का भी आगे पीछे हो जाता है तो आपका टी टेस्ट नहीं आएगा। राइट। We have seen water, food, exercise, excretion, rest, माइंड मैनेज, ये 6 देखा है। उसका क्या क्वांटिटी है? देखिए अब मैं बताता हूँ। एयर हुँ, का तो ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर इफ यू आर कॉन्शियस डू प्राणायामा, योगा, मेडिटेशन करो, दैट वुड हेल्प योर एयर एलिमेंट। हुँ, प्लीज पानी। देखो लोग का ये बड़ा कंफ्यूजन है, कितना पानी पीना चाहिए? कुछ लोग हुँ, बोलते हैं जब आपको प्यास होता तभी पानी पियो। हुँ, एक्चुअली पानी कितना पीना चाहिए? हमारा ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड है ना 4 to 5 लीटर होता है। हुँ, ब्लड क्या करता है? व्हेन इट इज हार्ट इज पंपिंग, इट गोस टू ईच एंड एवरी सेल। ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट 40-50 ट्रिलियन सेल्स। ईच सेल इज लाइक ए जनरेटर। एक हुँ, जनरेटर में क्या होगा? जनरेटर में व्हेन यू गिव द ऑक्सीजन, व्हेन यू गिव योर फूड, वो बर्न होता है वहां पे, देन यू गेट द एनर्जी देयर। जो वेस्ट मटेरियल है वहां से सेल से बाहर जाना चाहिए। ये बाहर जाना कहाँ से जाता है? खून की वजह से जाता है। इफ यू हुँ, डोंट ड्रिंक वाटर क्या होगा? हुँ, वो जो गंदगी अंदर ही घूमते रहेगा। So drinking ओह! 3 to 4 liters water is a must, non-negotiable. So how to drink water? Again, there is a process. You just can't drink 3 to 4 liters as you like. There is a process. ने दूसरा क्या? खाना। खाना कितना बार, कितना दम खाना चाहिए? लोग बोलता है देखो कम खाओ, ज्यादा बार खाओ। लॉट ऑफ पीपल सजेस्ट दैट। तो व्हाट इज द बेस्ट वे? अब हुँ, देखिए, इफ यू लुक एट द ह्यूमन इवैल्यूएशन,
I'm talking about hundred thousands of years ago. ऐसा नहीं कि अपने को खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता है बीच में स्नैक्स मिलता है. People have to hunt for food. Yes. Remember the भगवान की जो ये है, you cannot every hunt will become not successful. For your information, a tiger, it out of 10 of it attempts, he may get successful only once. Hmm. See, despite such fast, tiger is not able to find food so easily. But whereas human being food is very easy. So Yes. we are a problem of more food only. अच्छा, तो food कितना बार खाना चाहिए? Our human body is evolved with Hmm. fasting and feasting. Hmm. खाना मिला दबा के खाओ, मजे से खाओ, क्योंकि वी कैन नॉट स्टॉक इट. वो टाइम पे जो भी है अगर नहीं खाना तो खराब हो जाता है. Hmm. सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे गेट द फूड दे फीस्ट, दे एंजॉय अ लॉट. नहीं मिला Hmm. 2-3 दिन में खाना नहीं खाते. अभी हम लोग को क्या है, एवरीबॉडी इज ऑन अ फीस्टिंग मोड. Even the village people, poor people also look at every even old. I mean, from villages, very not well-to-do people. They have a belly fat, overweight. How come? They're on a feasting mode. They're taking 3-4 times coffee, tea, falana khate, dimag ka khate raho. So obviously the same problem. So Hmm. fasting and feasting. So the best is what, in a day, if you are able to eat 2 times, food is great. तो ये Hmm. कहा होता है हिंदी में, Hmm. 3 बार खाने वाले को बोलता है भोगी, मतलब एंजॉय Huh. कर रहा है. Huh. 2 बार खाने वाले को बोलता है, सॉरी, 3 बार खाने वाले को बोलता है रोगी, मतलब इज ए अच्छा, पेशेंट. he's a हाँ, patient. हाँ. 2 बार खाने वाला भोगी है, हाँ. 1 बार खाने वाला योगी है, हाँ. योगी. और 4 बार वाला वो इज एनिमी ऑफ एवरीबॉडी. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो फूड का बात हुआ मैडम. देन पानी का 3-4 लीटर पीना जरूरी है. हाँ. खाना जो आपकी मर्जी है, जो घर का बना वाला खाना आराम से 2 बार दबा के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. You just make the small change, you see the difference. पानी हो गया, then comes खाना हो excretion, गया. removal of the waste from the body. 2 बार दिन में बाउल मूवमेंट होना जरूरी है. उसका एक टेक्निक है, मैं बताता हूँ आपको टेक्निक क्या है. हाँ, 2 बार अगर if you're able to clear your bowels every day, preferably in Hmm. the morning, believe Hmm. me, you will be on a floating mode. You will not be on a walking mode. You'll be on a floating mode. Wow. सो दिस इज व्हाट एक्सक्रीशन हो गया. रेस्ट, रेस्ट को आप जानते हो 7 घंटा सोना जरूरी है. बट हाँ. दैट वी आर ऑल वी कैन सी द डे लाइट ओनली. रात को हमको दिखता नहीं है. सो वी आर सपोज टू स्लीप इन द नाइट. देयर आर सम एनिमल्स दे ओनली सी इन द नाइट. They go in the Hmm. night only. But nowadays क्या होगा, because of the 24 hours light, we don't know. We are simply doing it. There is a circadian rhythm. The body has Hmm. internal clock. If somebody is working in the night shift, watch out, madam. Many people, 90% of the people who are working in the night shift are bound to have health problems. Yes, मैं I लोगों have को seen बोलता this. हूँ मैं लोगों को बोलता हूँ, if you have a night shift, I empathize with you. First opportunity, find a job and find something else. If you are not finding, then you have to be extremely disciplined. You have to learn how to continue a job night duty and still stay healthy. I can guide you on that. हाँ. So this is the circadian rhythm. So we have talked about rest. Mind management, आप तो जानते हो how to go about. Inner engineering is a wonderful program. If anybody does the inner engineering, then pick Hmm. up all your remote controls from various people, keep it with you. Sadhguru says, nobody can make me happy or nobody can make me unhappy. Look at the statement. Amazing. Yes. If somebody comes and gives a lakh of rupees, you will say, "Ah, great." And somebody comes and abuses you, you get upset. That means what? Your remote is not with you, it's with Hmm. others. So that's not a life. That's a life of slavery. That's what Sadhguru says. So Yes. these are the essentials. And now we will probably talk about, as I told you, ma'am, there are 3 steps. Step one, step two, step three. Hmm. This is the 30 wellness secrets. The 30 secrets are there. We will Oh. learn 10 secrets are there to know about your health score, Hmm. how healthy you are. And there are 10 secrets to know what are the abuses we are doing, what are the mistakes we are doing. We are all doing mistakes. But we Hmm. are doing because we know any number of mistakes. Let me tell you, human body is so wonderfully created by Bhagwan. I Hmm. always say that you have given us a long rope. So we think nothing is happened. True, nothing happens for decades, but the damage is happening. और वो भी irreparable damage होता है. नहीं, और ऐसा नहीं है, रिपेयरेबल नहीं मैडम. द ब्यूटी ऑफ द बॉडी, आई टेल यू, you Hmm. require decades to spoil your body.
It just requires 3 to 4 months to revive your health. 90%. Really? Yes, that's what I'm telling you. My health score was almost poor. What all Yeah. parameters I suggested, I was in red in all parameters. But in 4 months, I jumped from poor health to 80%. In my group, I've seen, I check people. See, how Mm, do we check your health, ma'am? Somebody, I'll ask you, how is your health? Somebody say, mm, no, I'm fine, no problem. I'll tell you clear indicators of ill health. Anybody is overweight. mm, What is overweight? Say 5 feet person in India mm, should mm. not be beyond 50-55 kg weight. 5 They feet should not be. should not be. That means you're overweight. Well, Mm, generally, I'm giving an indicator. Or mm, 5 feet 6 inches, the average height should be 60 to 65. mm, 6 feet person should be around 70-75 kg weight is ideal. mm, About the waist size, look at your what type of pant you're wearing. Say you are mm, 5 feet, that means you are 60 inches height. Half mm, of height should be your waist size. mm. So your waist size is 35. That means Mm. you have a lot of fat in your abdominal area. So Yes. height and waist size important. Second Mm. criteria, actually, if somebody has a belly fat, you can see visible belly fat for people. Nowadays, if you see, only I thought women were having belly fat when they're pregnant. But look at Uh, men also nowadays. men have the same. Somebody seems that maybe delivery is next tomorrow or day after. To that level, they are the people. Very unfortunate. Yes. And they think there Yes. is no problem. True, there is no problem. As I said to you, human body is so wonderful. Even 70-80% of our internal organs are not functioning. Even then, you may not get a single symptom. Can you beat it, ma'am? Such a wonderfully created body. I've seen people, they Hmm. say, great. When I put them into my test, I'll tell them that look where they stand. Okay, third, one is weight should be as per height. Weight Hmm. should be half of height in inches. Your Hmm. blood pressure should be 90 by 60 to 120 by 80. That's the range actually. 90 by 60, but they Yeah, consider it as low lot blood of people. pressure. Well, let me tell you, lot of people think 90 by 60 is low pressure. Not at all. Yes. You know, my blood pressure used to be 130 by 90 with medication in Hmm. 2014. You know, my blood pressure is 90 by 60 now, 100 by 70. That too, when I run my 5 floor building up and down 5 times, I check my BP, it doesn't exceed more than 110 by 70. See what happened? Internally, blood pressure is nothing but resistance, ma'am. Somebody is Hmm. overweight, somebody has a lot of internal pollution. What Hmm. happened? The body is trying to manage that pressure. See, body is not stupid. Somebody is having a blood pressure. What does that mean? Body knows that that much pressure is required for that guy. Somebody say 130 by 90. We Hmm. simply go to the doctor and ask, oh, I have high blood pressure. So he gives the medicine. That's not the right approach. Body is not stupid. Body is trying to see, oh, this guy requires. Suppose somebody is supposed to be 5 feet person, should be Hmm. 60. Suppose he is 90 kg. Obviously, that person require more blood pressure. See, the same heart has not increased. 5 feet fellow, True. his heart Yeah. has not gone double size, Yeah. but his weight has gone double. So the heart has to work hard. We are trying to be smarter than the body. Totally wrong. But it does not mean you must take medication. See, medication is something like it, madam. See, if you are hurt, if you are injured, you are not able to walk. It is very right to take a stick, take the Hmm. support of the stick and walk. Hmm. Does it mean that you lifelong you carry the stick with you? No, Not not at at all. all. So, okay, a person with a paralysis or what is polio, he had a weak leg, that is understandable. He may require the stick lifelong. But a Hmm. person who got the problem because of overweight or wrong habits, obviously, maybe for a few months he may require the stick. So take the help of the doctor, take the medication. But if you are decided to live life with a stick all along life, that's what is happening. They say, oh, you have a diabetes. No, you cannot get rid of medicine. True. Why doctor is saying? Because you are not going to change. You are not going to Hmm. make changes. You have not Yeah. understood the fundamentals. People, madam, I'll tell you, we are having trouble because we don't understand fundamentals. We Hmm. don't make the foundation strong. When I make my foundation strong, I can build 3 stories, 5 stories, 6 story building. If I don't do that, if I start making more stories, I collapse. That's very right.
Small mistakes. We are all doing small mistakes. We will be surprised when we see in the next talk, when we look at it, what are the mistakes we are doing. And I we would are surely doing, love to know all this. we are Yeah. doing mindlessly. It's not that we all know. See, madam, you just ask a fifth standard person why people are getting unhealthy, why this guy is become overweight, he's got sugar, he's got cancer, why that? He will simply tell you, sir, people are not eating good food. They're eating junk food. They don't drink water. They don't go to toilet regularly. They don't sleep well. They are stressed. They don't do any exercise. That's all. No, anything else? Can you guess anything else, madam? No, the Not at answer is all. also the same. You don't require technology. Sleep well, eat good food, don't eat junk food, do exercise, right? The problem is we don't understand. See, as I said to you in the morning, if you want to tune radio Mirch 98.3 hertz, suppose you tune to 98.29, Even madam, then, it there won't. is a noise, no music. Very Or right. similarly, here also, no, no, look, I drink water, I eat food, I am conscious, I eat good food. Doesn't work. It just doesn't work. We need to know the appropriate way of eating and dealing with the activities that we have been doing throughout our life. I Yeah, guess yeah, this is what yeah. I'll have to request you regularly in next few days. Again, I'll have to request you for a live session so that we come to know more about the ways how we should handle our life. True. Because these lifestyle disorders have actually brought up a toll in our lives. Casualties, as we all know, it's happening every now and then, and we are so clueless about all the things happening around us. So today you gave us an insight about everything, and it's such an inspiring interview that I've come across. A person who has already lived a journey of that kind, and now you're guiding people how to eat, how to drink, how to sleep. It's lovely, and I'm going to request you soon in the coming future for having more details about how to stay healthy without medicines, and if medicines are there, even then how to cure ourselves, how to do the inner engineering with Rao Saab. Thank you sir, thank you for today's session. And चलते चलते अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं in few words, what would it be for everybody? Certainly, ma'am. Certainly. See, basically, as I said to you, this 30 wellness secrets, three-step approach, once you understand, I want next time onwards, I tell you, you can give this lecture. I've invested more than 7,000 hours in the last 10 years. I'm so passionate. I want to teach people. And people who have learned from me, they themselves are giving talks now. It is Ah, possible. Once you understand what happens, once you transform yourself, your health will be transformed. You will be able to make a huge difference in your family. At one time, madam, I'll tell you what is health. If I just have to tell you in a minute, what is health? How do we know this guy is healthy or unhealthy? Okay, by looks, okay, he's not overweight, all that. We don't internally, I don't know his blood test and all that, right? And what? Simple, I'll tell you. At one time, until 2014, I go for a swimming. I used to love swimming. If I go for swimming one day, I used to sneeze for 3, 4 days. I used to take some medicine. oh, Last 10 years, if there is a rain, I spend 1 hour in the rain. I enjoy rain. I have not got cold so far. What does it mean? This is what I want everybody to learn this, ma'am. Maybe in some of the things you can watch my videos. Not only me, my grandchildren. I have two grandchildren who live in US. One boy is ah, 3 years, another boy is 8 years. Believe me, they oh have my not god. fallen sick. Because why? 10 years ago I become knowledgeable. Otherwise I didn't know. And nobody in my family, nobody can become sick. As I said to you, until I was working in escorts, my company had invested 25,000 per yearly for a 10 lakhs insurance. You know, all companies. Insurance. And Yes. I retired in 2016, madam. But 1 year I continued that insurance 25,000. Last 9 years I don't have insurance. I have taken a third party insurance, 890 rupees. If something happens to me, accident, my wife will get 10 lakhs. And there is no Oh, way that I go to the hospital for treatment. By and large, for lifestyle disorders, but something happens, some infection, all that. So this is possible for everybody. That's what I tell, madam. You can prevent lifestyle disorders. You can, to a large extent, cure, provided you have not been sick for long years. See, as I said to you, if somebody is diabetic,
for say 15 years and with Hmm. lot of medication and with other comorbidities. That means we have buggered up our health. Hmm. It is possible. Now, I have recently seen case studies. I have more than 700 blood reports with me, ma'am. I have put everything in Excel. I Hmm. look at now, I can tell people by looking at them. I don't need blood reports. I look at them. I discuss with their habits from morning to night what they do. And I Hmm. can write and give it to you what sort of parameters you will have. माय 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 सो आपसे बात करके इतना तो मुझे समझ में आएगा कि वी आर सिटिंग इन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन एक्सरे मशीन I mean, you are an X-ray machine. You can actually detect what problem is there with the person sitting just next to you. So, thank you so much for all the insights that you gave about health. And soon we'll be going to talk more about health issues and how to get rid of that and stay healthy without medicines. Thank you so much, sir. Can I ask you Thank a you for small today's favor? session. Yeah, sir. Why not? I will send you a two-page write-up, the 30 Hmm. wellness secrets. If Yeah. somebody reads that and listen to my, I have a YouTube channel, Wellness Secrets. I'll I'm attach that after the live. Yeah, I'll please do that. attach this. Yeah. I'm so crazy. I have made so many videos. I'm least bothered what anybody says. I just keep on enhancing my knowledge. I try That's and really put good. it simplified there. There are a lot of people spoke to me. At least I have 15, 20 people spoke to me in the last few weeks. They said, "Sir, we saw your video. We have made changes, and now my health score has improved." This is possible. And That's I lovely. appreciate your time, ma'am. Through you, I would reach many people. And my mobile number is, I'll give you my mobile number. Anybody Yeah. can contact me. 9840852996. I'll repeat, 9840852996. Anybody can send me a message. I love to help them. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much. Bye See bye. you soon again. Yeah. Yeah. Namaste. Yeah.